Bismillahirrahmanirrahim. In today's video lecture, I will explain levels of organization. Here in this diagram, we can see that levels of organization starting from bottom, that is subatomic and atomic level, to the top, at the biosphere level. Subatomic and atomic level give rise to molecular level, and then organelle level then give rise to cell level, and after cell level, tissue level, after tissue level, organ and organ system level, and then individual level, then population, and then community level, and finally biosphere level. यहाँ पे जो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है, अगर हम उसकी बात करें तो एटम्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इन केस ऑफ लिविंग सेल्स हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ऑर्गेनील्स बनाएंगे। ऑर्गेनील्स will combine together to form cells, और cells आपस में combine होके tissues बनाएंगे, और यही tissues combine होके organs and organ systems की formation होती है, and then after that it will form individual level, and बहुत सारे individuals जब एक ख़ास हैबिटेट के अंदर रह रहे हों और एक ख़ास टाइम के अंदर, तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं, और यही पॉपुलेशन किसी ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर, और बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन जो किसी ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हों, तो वो कम्युनिटीज़ बनाती हैं, और यही कम्युनिटीज़, बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो है वो किसी अर्थ के किसी ख़ास रीजन के अंदर अगर वो पाए जाते हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। Then we will go through levels of organization, and the first step of level of organization is subatomic and atomic levels. As all matter is composed of elements, and each element contain same type of atoms. अब जो एटम्स को अगर हम फर्दर स्टडी करें, तो एक एटम को फर्दर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। टोटली अभी तक 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर के अंदर मौजूद हैं। आउट ऑफ दी 16 आर बायो एलिमेंट्स, और जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म 99% ऑफ बॉडीज मास, एंड दीज एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, calcium, and phosphorus, and the remaining 10 they will form 1% of the body's mass, जिनमें potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, etc. In molecular level, these bioelements will then combine together to form biomolecules. केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा कि जिस तरह एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एग्जैक्टली बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ और वेरियस वेराइटीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर वेरियस टाइप की जो बॉन्डिंग की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो there are actually two major types of biomolecules: micromolecules and macromolecules. Micromolecules are those molecules which have very low molecular weight, like glucose and water, and other macromolecules, those molecules which have greater molecular weight, they are known as macromolecules, just like starch, protein, and lipid. And here third level of organization is organelle and cell level. These biomolecules then combine together to form organelles, and these organelles are actually subcellular structures. Basically, these subcellular structures combine together to form cells, and these cells are a basic unit of life. अब जो organelles है, they have specific function. हर organelle का अपना specific function होगा कि for example ribosomes are specific for protein synthesis, and mitochondria is involved in cellular respiration, etc. In case of prokaryotes and most protista, their whole body consists of single cells.
तो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारा का सारा एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जो कि सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं। बट इन केस ऑफ फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। एंड देन आफ्टर दैट ए टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है वो सिमिलर सेल्स जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, क्योंकि जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका एक ही फंक्शन होता है। There are various type of tissues, animal tissues as well as plant tissues, like epidermal tissues, ground tissues, and nervous tissues and muscular tissues. And the fifth level is organ and organ system level. Different types of tissues, they combine together to form organs, uh, but they have related function. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमक एक ऑर्गन है, जिसके अंदर दो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। वन इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यूज एंड अनदर इज नोन एज मस्कुलर टिश्यूज। अब जो स्टोमक ऑर्गन है इसका एक ही फंक्शन है, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड एंड स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड फंक्शन है। तो जो मस्कुलर जो टिश्यूज हैं, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टोमक वॉल्स एज दे आर प्रेजेंट इन स्टोमक वॉल्स। तो जिसकी वजह से क्या होती है कि फूड की ग्राइंडिंग होती है। एंड ऑन अदर हैंड एपिथेलियल टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन स्क्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो कि अगेन जिसका फंक्शन डाइजेशन करना है प्रोटीन्स को। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो है वो एक ही ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन मींस के वो फूड की डाइजेशन और स्टोरेज में ही वो रोल प्ले कर रहे हैं, although दे आर डिफरेंट टिश्यूज। अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दे डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग सेम फंक्शन और आर अगेन ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स अब फिर कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो एग्जांपल लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देर आर वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक ओरल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज एक्सेट्रा। तो वो ऑर्गन सारे मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। And if we will move towards individual level, these different organs and organ systems combined together, they will form an individual or an organism. Up within one individual or organism, there are various types of systems like circulatory system, nervous system, digestive system, etc. But all these systems are coordinated together. मतलब कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल अगर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनके सिर्फ मसल सेल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी जो रिस्पायरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है, हार्ट बीट उसकी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स के सिर्फ एक ही सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, वो सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि रिस्पायरेशन रेट क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन और फूड जो है वो सप्लाई करे मसल सेल्स तक, जहाँ पे जो है वो जहाँ पे वर्क डन हो रही है। तो इसी तरह जो है ऑल दीज सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पॉपुलेशन लेवल। Population level members of same species. What is population actually? If the individuals of same species, different number of or the individuals of same species living in particular habitat in particular time, क्योंकि particular time भी बहुत important है, time के हिसाब से जो है वो population increase होती जाती है, increase या decrease होती जाती है। तो पॉपुलेशन को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होंगे सेम स्पीशी के सिर्फ होने चाहिए, किसी ख़ास टाइम में, किसी ख़ास टाइम के अंदर, किसी ख़ास इन्वायरमेंट में या हैबिटेट में वो रह रहे हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब कम्युनिटी लेवल,
Different populations, if they are interacting with one another within same environment, they are known as कम्युनिटी. उसको हम कम्युनिटीज़ कहते हैं कि बहुत सारे पॉपुलेशंस अगर एक ख़ास इन्वायरमेंट में हो रहे हैं तो वो फिर कम्युनिटी बनाते हैं. एंड देन बायोस्फीयर लेवल. Before moving towards biosphere level, for example, forest community example है community level का कि forest community contain many populations like microorganisms, plants, animals, fungi, etc. क्योंकि ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं, उनके populations वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये सारे populations मिलके एक community बना रहे हैं. And then biosphere level, जो community levels हैं, बहुत सारे community levels मिलके biosphere बनाते हैं. And it include all ecosystems. They are also known as zone of life on earth. Different type of communities if living together in specific region. In cellular organization, all organisms are divided into 5 major groups. जितने भी इन organisms हैं उन सबको 5 groups में divide किया गया है. सबसे पहला group है protista, prokaryotes, fungi, animals and plants. But in all these groups, they have 3 types of cell organizations. If any organism has unicellular cell organization, that is known as unicellular organism. And if they have colonial organization, they are known as colonial organisms. And if they have multicellular organization, they are known as multicellular organisms. If we talk about unicellular organisms, as their whole body consists of single cell and all activities of life are performed by on a single cell, and the best examples are amoeba, paramecium, euglena, etc. But in case of colonial type, these organisms live in colonies basically. They do not have any division of labor and they are independent. They do not depend on each other, but they are living in colonies. The best example is hundreds of Volvox cells make a colony, is shown in diagram as well. तो ये जो Volvox है, this Volvox is actually type of algae which is present in water. तो hundreds of Volvox के जो cells हैं वो एक colony में रहते हैं, जिनको colonial type कहा जाता है. And the last is multicellular organization, जो कि अगेन अभी हमने स्टडी किया कि टिश्यूज सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके अंदर टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम टाइप होगी. एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट. Here you can see the mustard plant in diagram. The scientific name of mustard plant is Brassica campestris, and their body parts are actually divided into 2 types. One is vegetative part and another is reproductive part. Is vegetative vegetative organs or part include roots, leaves, stem and branches. On the other hand, reproductive part includes flowers. Vegetative part is also known as non-reproductive part, जो कि sexual reproduction के अंदर involved नहीं होता है. And reproductive part जो flowers हैं, they are involved in sexual reproduction. This diagram shows the various parts of frog. The scientific name of frog is known as Rana tigrina, and the body again will consist of organs, systems, and these organs and systems have specific type of tissues called epithelial, glandular, and muscular and nervous tissues. You can see the various parts of the frog in this diagram: small intestine, pancreas, lungs, stomach, kidney, urinary bladder. And if you will go for dissection of frog, then you will be well aware about all these parts. Thank you so much.